Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 and subject is science. Syllabus is chapters 9 to 16. Now question number 1a, write the correct alternative from those given below each question. Chapter number 9, question number 1, which of the following trees is found in coastal areas? Which of the following trees is found in coastal areas? A. Sesame, B. eucalyptus, coconut, date palm. Which of the following tree is found in coastal areas? Our right answer is coconut. Number 1. Which of the following trees is found in coastal areas? A. Sesame, B. eucalyptus, C. coconut, D. date palm. The right answer is C. coconut. 2 number. Which animal is also known as the sheep of the desert? रण का जो जहाज कौन कहलाता है? Which animal is, कौन सा एनिमल है जो जाना जाता है एज द शीप ऑफ द डेजर्ट? ए याक, बी कैमल, सी एलिफेंट, डी कंगारू. राइट आंसर इज कैमल जो है जो क्या कहलाता है? शीप का, रण का जो है शीप के डेजर्ट का शीप कहलाता है, रण का जहाज कहलाता है. 3 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स is a sea animal? Which of the following creatures is a sea animal? A. frog, B. snail, C. crab, D. crane. Which of the following creatures is a sea animal? A. frog, B. snail, C. crab, D. crane. Our right answer is crab. crab जो है क्या है? सी एनिमल कहलाता है. नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज नॉट अ सी एनिमल? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज नॉट अ सी एनिमल? ए. ऑक्टोपस, बी. फिश, सी. व्हेल एंड डी. स्नेल. 4 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स is not a sea animal? A. octopus, B. fish, C. whale and D. snail. Our right answer is D. snail. 5 number. Which of the following animals can live both in water as well as on land? A. frog, B. fish, C. octopus, D. jellyfish. Our right answer is frog. जो frog जो है वो कहाँ पानी और जमीन दोनों पर रहता है, रह सकता है, तो ये ए frog लिखेंगे. 6 number. Which of the following animals does not breathe through gills? Fish, A. fish, B. tadpole, C. whale and D. none of the given. Which of the following animals does not breathe through gills? A. fish, B. tadpole, C. whale and D. none of the given. Our right answer is whale. 7 number. Flowers of which of the following plants bloom only at night? नीचे जो फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं फूलों के नाम, उसमें से कौन जो रात को खिलता है, खाली रात को ही खिलता है? ए. रोज, बी. मिमोसा, सी. सनफ्लावर, डी. लिली. राइट आंसर इज डी. लिली. नाउ चैप्टर नंबर 10. विच नंबर 1. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज यूज्ड बाय मैन to go from one place to another till
द बिगिनिंग ऑफ 19th century. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज यूज ज़माने में, जब पुराने ज़माने में लोग किसका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 19th सेंचुरी में किसका इस्तेमाल करते थे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे? ए एनिमल्स, बी स्टीम इंजन, सी मोटर बोट एंड डी ऑटोमोबाइल. राइट आंसर इज ए एनिमल्स. 2 number. Which type of railway engines were invented in the beginning? 2 number. Which type of railway engines were invented in the beginning? A steam engine, B electric engine, D diesel engine and D monorail engine. A steam engine, B electric engine, C diesel engine, D monorail engine. Our right answer is steam engine. Number 3. Which of the following was invented before the 20th century? नीचे जो दिए गए हैं इन्वेंटेड जो की गई ज़्यादा की गई हैं पहले है 20वीं सेंचुरी के पहले की गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बिफोर द 20th century? ए स्पेसक्राफ्ट, बी इलेक्ट्रिक ट्रेन, सी मोनोरेल एंड डी गुड्स ट्रेन. राइट आंसर इज गुड्स ट्रेन. जो माल सामान की आती है, जो माल सामान ले जाती लाती है, गुड्स ट्रेन. D goods train. 4 number. Which of the following is the largest unit of length? Which of the following is the largest unit of length? A meter, B kilometer, C centimeter, D millimeter. Right answer is kilometer. 5 number. Which is the standard device to measure length? Which is the standard device to measure length? A compass box, B protractor, C meter scale and D set square. Right answer is meter scale. Number 5. Which is the standard device to measure length? A compass box, B protractor, C meter scale, D set square. Right answer is meter scale. C meter scale. 6 number. Which is a practical unit to measure the distance between two cities? Which is a practical unit to measure the distance between two cities? A meter, B centimeter, C millimeter, D kilometer. Our right answer is kilometer. 7 number. What is the type of motion executed by the blades of a fan? What is the type of motion executed by the blades of a fan? A rectilinear motion, B chord motion, C circular motion, D none of these. फैन जो गोल घूमता है तो उसकी कौन सी मोशन कहलाएगी, जो वो गति कौन सी है? सर्क्यूलर मोशन. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्लेड, जो होती पंखे की जो ब्लेड्स घूमती है, ऑफ अ फैन? ए है रेक्टिलाइनर मोशन, सीधी होती जो कॉर्ड जो मोशन जो होती है वली हुई होती है, सी सर्क्यूलर मोशन और डी है नन ऑफ दीज. तीनों में से कोई भी नहीं. बट राइट आंसर इज सर्क्यूलर मोशन. फैन जो है वो गोल घूमता है
इसकी चाल क्या कहलाएगी? सर्क्यूलर राउंड जो होती है। तो राइट आंसर सी, सर्क्यूलर मोशन। नाउ चैप्टर नंबर 11, नंबर 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट? कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें से रोज जो होती है लाइट जो होती है रोशनी पास नहीं हो सकती? ए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, सी ओपेक एंड डी लुमिनस। राइट आंसर ओपेक जो होता है जो आर पर दिखाई नहीं देता, जिससे उसमें से लाइट पसार नहीं हो सकती। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट? ए ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसल्यूसेंट, C opaque and D luminous. Right answer C opaque. 2 number, which of the following objects is translucent? Which of the following object is translucent? A mirror, B milky glass, C lens, D milk. The right answer is milky glass. Number 3, which of the following bodies is luminous? Number 3, which of the following bodies is luminous? A moon, B planet Venus, C sun, D glass. Our right answer is C sun. 4 number, what is the nature of the image formed by a plane mirror? 4 number, what is the nature of the image formed by a plane mirror? A erect and enlarged, क्या है? erect and enlarged. B erect and diminished. C क्या है? inverted and enlarged. D erect and same size as that of the object. Our right answer is erect and same size as that of the object. चैप्टर्स के है 12 और 13 है। 12 एंड 13, नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी? नीचे जो डिवाइसेस दिए गए हैं हमें कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? ए ट्यूबलाइट, बी इलेक्ट्रिक सेल, सी सोलर कुकर, डी इलेक्ट्रिक बल्ब। Number 1, which of the following devices provides us with electricity? A tube light, B electric cell, C solar cooker, D electric bulb. Our right answer is electric cell. 2 number, how many terminals does an electric cell have? How many terminals does an electric cell have? A1, B2, C3, D4. टर्मिनल जो होते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में? तो राइट आंसर इज B2. 3 number, from what does the electric cell produce electricity? From what does the electric cell produce electricity? A, from a metal strip, B, from chemicals, C, from torch, D, from terminals. Number 3, from what does the electric cell produce electricity? A, from a metal strip,
B from chemicals, C from torch, and D from terminals. Our right answer is B from chemicals. Phone number, which of the following substances is a good conductor of electricity? Phone number, which of the following substances is a good conductor of electricity? A plastic, B copper wire, C chalk, and D rubber. A plastic, B copper wire, C chalk, D rubber. Right answer is B copper wire. Number 5. What is used to break or complete the circuit in electrical appliances? Number 5. What is used to break or complete the circuit in electrical appliances? A filament, B switch, C insulator, D electric cell. Our right answer is B switch. Number 6. Which of the following objects is attracted by a magnet? Number 6. Which of the following object is attracted by a magnet? मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, लो चुंबक जो होता है उससे क्या है, अट्रैक्ट होती है. ए पेंसिल, बी कॉम्ब, सी नीडल, डी ग्लास. A pencil, B comb, C needle, and D glass. राइट आंसर इज नीडल. लोखंड को क्या है, जो मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो राइट आंसर इज सी नीडल. नीडल जो होती है, सुई होती है, उसे वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेट. नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स is attracted by a magnet? A aluminium, B copper, C magnesium, and D iron. राइट आंसर इज आयरन है. जो क्या है, मेटल, जो आयरन जो मेटल है अट्रैक्टेड होती है बाय मैग्नेट. नंबर 8. व्हाट इज द शेप ऑफ अ बार मैग्नेट? व्हाट इज द शेप of a bar magnet? A rectangular strip, B cylindrical, C like a horseshoe, D ring shaped. Right answer is rectangular strip. Number 9. If a bar magnet is suspended freely, in which direction does its south pole come to rest? If a bar magnet is suspended freely, in which direction does its south pole come to rest? A north, B south, C east, and D west. Right answer is B south. 10 number. What is the shape of the magnet used in a magnetic compass? 10 number. What is the shape of the magnet used in a magnetic compass? A rectangular strip, B needle-like, C cylindrical, and D like a horseshoe. 10 number. What is the shape of the magnet used in a magnetic compass? A rectangular strip, B needle-like, C cylindrical, and D like a horseshoe.
Right answer is B, needle-like. Chapter 14. Number 1. Which of the following is not a source of water? Number 1. Which of the following जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन जो है वाटर का सोर्स नहीं है, वाटर का जरिया नहीं है? ए रिवर, बी लैक, सी वेल एंड डी ग्राउंड. ग्राउंड जो है वो वाटर का सोर्स नहीं है, इसका जरिया नहीं, जराई नहीं है. तो नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? ए रिवर, बी लैक, सी वेल एंड डी ग्राउंड. आवर राइट आंसर इज डी ग्राउंड. Number 2. Which of the following contains the highest amount of water? Which of the following contains the highest amount of water? A river, B lake, C well and D ocean. जो महासागर होते हैं वहाँ पर क्या है, ज़्यादा पानी, वहाँ पानी क्या हाईएस्ट अमाउंट में होता है? Our right answer is D, ocean. So number 2. Which of the following contains the highest amount of water? A river, B lake, C well, D ocean. Our right answer is D, ocean. 3 number. How much area of Earth's surface is covered with water? Number 3. How much area of Earth's surface is covered with water? A 1/2, B 1/3, C 1/4 and D 2/3. 2/3. 2/3. The right answer is 2/3. 1 number. What does the vapor of the salty sea water contain? What does the vapor of the salty sea water contain? A. Salts, B. Common salt and water vapor, C. Common salt, D. Pure water vapor. A. Salts, B. Common salt and water vapor, C. Common salt, D. Pure water vapor. Our right answer is D. Pure water vapor.